Hello guys, welcome to HR with Sanchita. Today's topic is approaches to industrial relations, in which I would be teaching you the approaches to industrial relations, which is really important for the Code 55 students and for the HR MBA students as well. Okay. And yes, like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon because almost daily I would be uploading videos for you till June so that we can complete the whole syllabus, and all this would be free of cost. Okay, and spread the word to your friends as well. Yes, and yes, subscribe to my Telegram channel for all the updates which I have pinned in the comments. Okay. Yes, so today we'll be learning the approaches. So there are a lot of approaches in industrial relations. Okay, so I have just listed these and then I would be explaining this further in my class. Okay, so first is the Unitary Approach, Pluralist Approach, Marxist Approach, Gandhian Approach, Systems Approach, and Systems Approach JT Dunlop वाली है, इसकी मैं क्लास ऑलरेडी ले चुकी हूँ. इससे पहली जस्ट क्लास जो हुई है, आप मेरे चैनल पे जाओगे वीडियोस में तो JT Dunlop और IILS मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमने किया है, which is really important. So go to that video and watch it. And the economic approach, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, सोच रहे होंगे मैम कितने अप्रोचेस बोल रही हैं, सारी एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो अभी एक बार रीड कर रहे हैं. ऑक्सफोर्ड अप्रोच, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, वीबर सोशल एक्शन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच. ओके, सो ये सारी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द अप्रोचेस वन बाय वन. सो यूनिटरी अप्रोच, ये आपने काफी सुनी भी होगी, यूनिटरी, प्लूरलिस्टिक अप्रोच. सो ये इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की. सो सी, अंडर यूनिटरी अप्रोच what is believed is that all the members working in the organization have a common set of objectives, purposes and interests. That means they have common objectives, they have common interests, they do not have conflicting interests. ठीक है, जहाँ पे conflicting interests आ जाते हैं then लड़ाइयाँ होती है, conflicts come into existence. But according to the unitary approach, all people working in the organization have common set of objectives, purposes and interests. And here, according to this approach, trade unions are considered unnecessary. That trade union should not be formed. Because trade union, the reason for the formation of trade union is like conflictive, when there are a lot of conflicts and you need to resolve them, right? So that is why trade unions are formed. But here in unitary approach, it is believed that all the members have common set of objectives, common interests. So that is why trade unions are considered as unnecessary, and conflict is perceived as disruptive. So conflict is also not necessary, and it is perceived as disruptive, that it is disruptive for the organization. ये अच्छा नहीं है organization के लिए conflict, तो ये unitary में consider होता है. Then conflict is a temporary divergence. इसको एक temporary divergence माना जाता है कि भटक जाना. Divergence क्या होता है? भटक जाना. ठीक है, so इसे temporary divergence कहा गया है, and which is due to, conflict arises due to poor management. ठीक है, poor management in the organization and negligence on the part of the employees. ठीक है, to when the employees are not able to understand and mix with the organizational culture, then the conflict arises according to the unitary approach. Okay, and it is seen as a result of poor management and temporary divergence, and when the people are not able to mix and adapt to the organizational culture. Okay, and according to this theory, the efficiency and profitability of the organization can be increased if everyone has a common interest. So पिछली slide में भी I have told you that here it is assumed that the people should have common interest and should not have conflicting interests. So according to this theory, the efficiency and profitability or productivity of the organization can increase if all the people have common interest. Okay, towards establishing harmonious relations. So I hope the unitary approach is clear to you all. Now, next comes the pluralistic approach, and pluralistic approach जो होती है, that is opposite of the unitary approach. Okay, so unitary में we used to assume that common interest is there, all the people are having common interest, but here they are having competing interests. You can see here. So here this approach assumes that the groups working in the organization have different competing interests. Okay,
And according to this approach, an organization consists of powerful and divergent subgroups, that is management and the trade union. तो यहाँ पे क्या है? They have become divergent, means they have different interests. They go on different sides. Okay. Right. And actually also, yes, management have different interests, trade unions have different interests. Right. Management को क्या चाहिए कि हम कम से कम wages दें, we should pay less wages and get more production. And what trade union wants? That they should get more wages, right? So that is why divergent interests, divergent subgroups, competing interests, right? Then next, legitimacy of the management's authority is not automatically accepted. अब इस लाइन का मतलब है कि ऐसे हम ट्रेड यूनियंस या जो एम्प्लॉयज हैं वो नहीं मानेंगे कि हाँ ये हमारे हेड हैं तो जो भी ये बोलेंगे एक्सेप्ट करो, ठीक है? सो ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. ओके. So now why do employees join unions? So they join unions to protect their interests and influence decision making by the management in pluralistic approach. So here also we are discussing the pluralistic approach. So employees join trade unions to protect their interest and जब ताकि उनको decision making में भी same मिल सके, ठीक है? And this approach sees conflicts and disagreements between the management and workers as inescapable. Inescapable मतलब कि हम avoid नहीं कर सकते हैं. We cannot avoid conflicts and disagreements in the organization because they tend to arise due to conflicting interests. Okay, according to this theory. And collective bargaining can be used to deal with the conflict. I hope this is clear. Obviously, when they would sit together, employees and employers, they would sit together and resolve issues, right? So that is collective bargaining. Conflict, if properly managed, can lead to innovation and positive changes, right? So if we manage conflict properly, अगर conflict को हम अच्छी तरीके से channelize करें, so that can be beneficial for our organization. Okay. So this is the pluralistic approach. I hope it is clear to you all. Now, next approach is Marxist approach, and it is often called the radical approach as well. It has been given by Karl Marx. Okay, so if someone asks you who has given the radical approach or who has given the Marxist approach, then your answer would be Karl Marx. So under this approach, conflict is seen as the product of the capitalist society, and industrial relations is seen as a part of class struggle and power struggle. So see, the main keywords that you need to remember in this radical or Marxist approach is that capitalist society, power struggle, class struggle. So this is how you can remember different approaches. So these are the keywords for this approach: class struggle, power struggle, capitalist society. Okay. So here basically conflict is a result of the capitalist society and the power struggle, and class struggle or power struggle किनके बीच में? The management and the workers. Okay. Now, conflict occurs not just due to competing interest. Do you remember in pluralistic approach, we just studied before this approach, what we said that conflict arises due to competing interest. But here it says कि conflict occurs not just due to competing interests, but also due to the division between the capitalist and the labor. That is the class, division of power. So why does conflict occur? It does not only occur due to competing interests, but also because of the division between the capitalists, who are the owners of production, and the labor. Okay, so this is Marxist approach. And the ultimate objective of the capitalists, see, I told you before also, so what do capitalists want, or what do the owners of production want? They want to increase the productivity by paying minimum wages. ठीक है, कम wages देना है और productivity पूरा लेना है labor से. And what is the aim of the workers? ठीक है, so workers want more wages, and obviously if they would adapt this attitude, if the capitalists would adapt this attitude that they want to pay minimum wages to the workers and take maximum work out of them, then obviously what would the workers feel? They would feel exploited. So that is the reason the class struggle is there, the power struggle is there. Okay, so
The Marxists believe that the state intervention via legislation and industrial tribunals work in the interest of the management and do not ensure a balance between the competing groups. See, according to this approach, the Karl Marx believes that yes, there are various legislations, there are various labor laws, okay, and even the government intervenes in certain situations, but according to this approach, that they also support these capitalists only, okay. The government also supports the capitalists only and forms laws in interest of the management. So Marxists believe this thing, okay. Now, so next comes the Gandhian approach, okay. So I have even told you before also that Gandhi ji has given trusteeship theory also, which is also really important in industrial relations. So I think the next class that I would be forming is for theories of industrial relations. That would be tomorrow, and one more topic, okay. And see what now, let's study this approach. Gandhiji believed in the goodness of man. So what he believed was that all men are good. So they become wrong due to the wrong systems, okay, and the evils of the modern world. So he says that every individual is good. Every man or woman has goodness in them, but they do wrong activities due to the wrong systems and the evils of the modern world, okay. So the people are not wrong, but their situations are wrong. This is said by Gandhiji, okay. And he's told that every worker should be treated as a human being, and he believed in non-violent communism. So obviously देखिए non-violence में गांधी believe करते थे, ठीक है. And he had told that yes, strike should be there, strike should be supported, but under certain conditions, okay. And strike should be the last weapon. फर्स्ट हमें कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, नॉन वायलेंस से हमें रिजॉल्व करनी चाहिए चीजें. और स्ट्राइक हमारा मतलब कि लास्ट मोटो होना चाहिए, कि लास्ट थिंग है कि हम हाँ कन्फ्लिक्टिंग स्ट्राइक से रिजॉल्व कर रहे हैं, राइट. एंड देयर शुड बी सर्टेन कंडीशंस फॉर स्ट्राइक, एंड अकॉर्डिंग टू हिम स्ट्राइक शुड बी द लास्ट वेपन. And here are the conditions for a strike which were given by Gandhiji, that the cause of strike must be just and there should be no strike without a grievance. अब ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही स्ट्राइक कर दी, ठीक है, कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ सॉलिड, there should be a solid reason for the conduction of the strike, okay. And there should be no violence. So when you are conducting strike, it should be peacefully conducted. There should not be any violence, okay. And yes, there are some people, whenever a strike is conducted, there are always some people who do not want to be a part of a strike, and that is there. One or two people in every organization will be there, भाई हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना, we do not want to be a part of the strike. तो फिर उन्हें क्या करते हैं बच्चे, लोग ना फिर हैरासमेंट करते हैं उन लोगों का कि तुम क्यों स्ट्राइक का पार्ट नहीं बन रहे हो. अब आप जब बच्चे कॉलेज में थे, अगर आपको मास बंक करना होता था और 2-3 बच्चे अगर बोलते थे नहीं नहीं हमें तो क्लास अटेंड करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, तो आप सब लोग उनको बोलते थे ना, उन्हें डांटते थे, ठीक है, या उनको अपने क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया, उनको कमेंट्स मारते थे. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है. द पीपल हु आर नॉन स्ट्राइकर्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लेग्स, ओके. सो दिस इज ऑफन आस्क्ड इन द एनटी एग्जाम ऑल्सो, हु आर ब्लैक लेग्स. या ब्लैक लेग्स की डेफिनेशन दे दी और नीचे कुछ ऑप्शंस दे दिए, ब्लैक लेग, येलो लेग, ठीक है. तो ब्लैक लेग्स आर द पीपल हु डू नॉट सपोर्ट द स्ट्राइक, हु if their fellow members are on strike, they do not become a part of the strike, okay. तो यहाँ पे क्या बोला है गांधी जी ने कि इनको हेरास नहीं करना, इनको मोलेस्ट नहीं करना है, ठीक है. नॉन स्ट्राइकर्स और ब्लैक लेग्स शुड नेवर बी मोलेस्टेड, okay. So non violence, okay, and non-strikers or black legs should not be molested, and the reason for the strike should be just, okay, and there should be no strike without a grievance. So this is our Gandhian approach. So as told before, he has also given the concept of trusteeship, in which he has given the concept of co-ownership of the assets of the organization. So what he has told is that employers should not regard themselves as the sole owner of mills and the factories which they own or of which they are legal owners, but they should regard themselves as co-owners, ठीक है. तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए जो कैपिटलिस्ट हैं या एम्प्लॉयर्स हैं कि वो ओनर्स हैं, ठीक है, उन्हें अपने आप को को ओनर्स समझना चाहिए. और जब हम एम्प्लॉयर्स को बोल रहे हैं या कैपिटलिस्ट को बोल रहे हैं कि
उनको अपने आप को को ओनर समझना चाहिए, तो वैसे ही वर्कर्स या एम्प्लॉयज को भी अपने आप को को ओनर समझना चाहिए। तो उनको अच्छे से जो मशीन वगैरह उन्हें मिलती है काम करने के लिए, वॉट एवर मशीन्स दे गेट, ठीक है, सो दे शुड नॉट ट्रीट देम एज एक्सप्लॉइटिंग एजेंट्स, ठीक है, या हमें ये नहीं ट्रीट करना चाहिए कि ये हमें एक्सप्लॉइट कर रही है या ये वाले एसेट्स एक्सप्लॉइटिंग एजेंट्स के हैं, मतलब ओनर्स होते हैं ना एक्सप्लॉइटिंग एजेंट्स, ठीक है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ओनर्स के हैं, हम कैसे भी मिसहैंडल कर लेते हैं, ठीक है, दे शुड ट्रीट देम एज देयर एसेट्स। सो व्हेन ओनर्स आर आस्क्ड that you are the co-owner, so it is the responsibility of the workers as well that they should treat the machines and whatever instruments they get to work on properly, ठीक है। So he has told the workers that they should not treat the machine and mill as the assets of the exploiting agents, but should treat them as their assets, protect them and make full use of them, ठीक है। So this is the concept of trusteeship. Now next comes the systems approach. अब ये systems approach मैंने एक पूरी YouTube वीडियो बनाई है इस पे 15-20 मिनट्स की systems approach पे और इसके पूरे components पे, और ये JT डनलप ने दी है, ओके। सो जस्ट इससे पहले जो मैंने क्लास अपलोड की है YouTube पे वो systems approach पे है, so you can go, ठीक है, go to that video and watch it after watching this class. So इसमें basically rules का रोल होता है कि rules are established as a result of interaction between actors, ideology and environmental context. अब ये वहां पे मैंने ज्यादा अच्छे से explain किया, so you can go to that video for systems approach, okay. So let's study economic approach, okay. So economic approach क्या होती है, that the concept of industrial relations evolves around the economic issues. So here economic issues are considered central to this approach, okay, or central to the industrial relations, right. So what they said is कि जो trade unions है that are formed for monetary gains or for protecting the economic interests of their members, right. See, so from the starting, trade unions are formed by the workers generally for the protection and promotion of economic interest of the members in the form of higher wages and monetary gains. कभी wages के लिए trade unions बनते, obviously trade unions किस लिए form होती हैं इस approach के according, wages के लिए, economic benefits के लिए, okay. So this is the economic approach. Now worker involves cost to the employee. We all know कि workers को pay, salary देनी पड़ती है, wages देनी पड़ती है, so that is why वो cost होते हैं. Whose primary aim and employers क्या होते हैं, employers का primary aim क्या होता है, employers की बात हो रही है, is to minimize cost and maximize profit. So वो क्या चाहेंगे, minimize cost, मतलब जो workers को wages देनी है वो cost हो गई ना, so उस मतलब कम से कम wages देंगे और profit maximize करेंगे. अब profit कैसे maximize करेंगे, how would they maximize the profit, when they would get out more production out of the workers. So in turn क्या होगा, workers का exploitation होगा, right. So this is the economic approach. Then comes the human relations approach. So human relations approach has this, I would teach you in OB also very nicely. So this approach has been advocated by Elton Mayo, okay? He is also called the father of human relations, right. So according to him, human initiatives from management, the employees positively listens and responds properly to them, and hence there is no room left for conflict to arise. So what is Elton Mayo said, that the workers should also have a good role in the organization. They should be listened, ठीक है, they should be listened to whatever their issues are, right, and we should be empathetic towards them. We should understand what are their human needs as well, right. So if all this we would understand, then there would be no room left for conflict to arise according to this approach, okay. So we should give the workers the freedom of speech, the freedom of thought, the freedom of expressing themselves, right. And yes, they have told that they need freedom of speech, thought, expression of movement and of control over their timings, okay. So this is what human relations approach has said. So next comes the Oxford approach. So it has been given by Alan Flanders. You need to remember this because this approach is not often discussed, okay, but you should know that it has been given by Alan Flanders. So according to this approach, the industrial relations system is a study of institutions of job regulations. So the key word in this approach is institutions of job regulations. So what do we study? The institutes or the institutions which regulate the job, okay.
and the stress is on substantive and procedural rules as in Dunlop's model. Okay, so first keyword that we study the institutions of job regulations, or we can say the institutions which regulate the job, okay, in this model, and the focus is on substantive and procedural rules. ठीक है, and substantive and procedural rules I have very well taught you in the systems theory in the last video. ओके अब सब्सटैंटिव रूल्स यहाँ पे एक लाइनर बता देती हूँ. सब्सटैंटिव रूल्स क्या होते हैं? वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हो गए सब्सटैंटिव रूल्स. और प्रोसीजरल रूल्स क्या हो गए कि किन प्रोसीजर से हमने सब्सटैंटिव रूल्स बनाए हैं. सो व्हाट आर द प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स दैट वी हैव यूज्ड to make the substantive rules. So those are procedural rules. Okay, so now Flanders considers every business enterprise as a social system of production and distribution which has a structured pattern of relationships. So here what I'm telling you is just remember that this system is a study of institutions of job regulations, right? And now, the institution of job regulation is categorized by him as internal and external. अब ये जो job regulate करती हैं चीजें, जो job की conditions को regulate करते हैं institutions, वो क्या होते हैं? Internal होते हैं और external होते हैं. अब I hope you've understood what are institution of job regulations. The institutions which regulate the job, which regulate the conditions of the job, which regulate the working in the job. Okay. So, अब ये क्या होते हैं? ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं. Now, what is internal? The internal being an internal part of the industrial relations system, such as code of work rules, मतलब जो भी rules हैं, ठीक है, वेज स्ट्रक्चर, इंटरनल प्रोसीजर ऑफ जॉइंट कंसल्टेशन एंड ग्रेवियंस प्रोसीजर. मतलब ग्रेवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है, हाउ डू वी हैंडल ग्रेवियंसेस, और व्हाट इज द वेज स्ट्रक्चर, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर जॉइंट कंसल्टेशन, व्हाट आर द वर्क रूल्स अंडर विच द वर्कर्स हैव टू वर्क. सो दीज ऑल आर इंटरनल, राइट? सो ऑब्वियसली यहाँ क्यों है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशन? क्योंकि ये सब चीजें भी जॉब को रेगुलेट करती हैं कि कैसे काम करना है, क्या रूल्स हैं, राइट? अब एक्सटर्नल, सो ही व्यूज ट्रेड यूनियंस एज एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन. तो एक्सटर्नल यहाँ पे क्या हो गए? ट्रेड यूनियंस, ठीक है. अब यहाँ पे लिखा है एंड एक्सक्लूड्स कलेक्टिव एग्रीमेंट्स फ्रॉम द स्फीयर ऑफ इंटरनल रेगुलेशन. अब क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग को सेंट्रल बोला गया है ऑक्सफोर्ड अप्रोच के अंडर, तो यहाँ पे ये इसीलिए इंक्लूड नहीं हुई है इंटरनल में, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग इज सेंट्रल टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम. ठीक है. अब इंटरनल क्या हो गए? सारे वर्क रूल्स, वेज स्ट्रक्चर, और एक्सटर्नल क्या हो गए? ट्रेड यूनियंस हो गए, एंड सेंट्रल कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ see, now the Oxford approach can be represented in the form of an equation. अब R is equal to function of B और R is equal to function of C. अब R क्या है? The rules governing industrial relations. अब systems approach में भी ये था, अब हमारी Oxford approach में भी एलन फ्लैंडर्स की ये है, rules को importance दी गई है. अब यहाँ पे क्या कहा गया है? Rules is equal to function of B, collective bargaining, or rules is equal to function of conflict resolved through collective bargaining. Okay, so collective bargaining has a central role under the Oxford approach of Alan Flanders. Okay, now then comes the industrial sociology approach. Okay, so यहाँ पे भी दो चीजों को काफी importance दी गई है. Let's read that G. Margeson, an industrial sociologist, holds the view that the core of industrial relations is the nature and development of conflict itself. ठीक है. So what this approach says is that we should study the industrial relations in the context of the nature and development of conflict. Okay, so according to him, conflict is the basic concept that should form the basis of industrial relations. So इसमें conflict को बहुत ज़्यादा importance दी गई है कि हमें conflict को समझना चाहिए, study करना चाहिए, and we should study that why it has developed, what is the nature of conflict. Okay, and he has criticized the prevalent approaches of industrial relations which were more concerned with studying the resolution of industrial conflict. So he has told, when he gave this theory, so the focus of industrial relations was more concerned with studying the resolutions. मतलब क्या हम conflict को कैसे resolve करें,
ठीक है, तो उस टाइम ऐसे इन चीजों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, दैट वी शुड स्टडी कि अब हाउ शुड वी रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स रादर देन इट्स जनरेशन। ठीक है, मतलब हमें अब इस इनकी अप्रोच के अकॉर्डिंग वी शुड स्टडी कि जनरेट कैसे हुई, व्हाट आर द रीजंस व्हाई कॉन्फ्लिक्ट हैज जनरेटेड, सो दैट वी कैन अवॉइड दीज थिंग्स इन फ्यूचर। ठीक है, so and at that time most of the theories were just studying the resolution, where Maggerson told that we should study the reasons why conflict has arisen. Okay, now so according to this school of thought, there are two major conceptual level of industrial relations. One is the intra plant level. ठीक है, अब इंट्रा प्लांट लेवल में क्या है, जहां पे सिचुएशनल फैक्टर्स सच एज जॉब कंटेंट, वर्क टास्क, टेक्नोलॉजी, इंटरैक्शन फैक्टर्स प्रोड्यूस थ्री टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिलेशंस। अब एक होता है इंट्रा प्लांट लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो इन सब फैक्टर्स की वजह से होती है, कंटेंट ऑफ द जॉब के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी के पीछे कि नई इंट्रोड्यूस करनी है कि नहीं, टास्क के पीछे हो जाती है, ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाती है। तो कैसी कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, स्ट्रक्चरल और ह्यूमन रिलेशंस। अब ह्यूमन रिलेशंस कौन सी होगी, ह्यूमन से रिलेटेड। स्ट्रक्चरल कौन सी होगी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हायरार्कीज हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट हुई वो स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट हुई। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट हुई। तो ये होती है हमारी इंट्रा प्लांट, मतलब विद इन द प्लांट, इन सब रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुई। अब जो सेकेंड लेवल है is outside the firm and concerns with the conflict not resolved at the intra-organizational level. अब जो conflicts हमारे within the plant नहीं resolve होती हैं, वो फिर second level पे चली जाती हैं, ठीक है। Now, however, this approach rejects the special emphasis given to the rule determination by the system and Oxford's model. यहाँ पे rule determination को उतनी importance नहीं दी जाती है। किन में दी जाती थी, in which approaches rules were given importance? First in the systems approach and then in the Alan Flanders Oxford approach. Okay. Then comes the Weber's social action approach. अब देखिए social action. So the social action approach of Max Weber has laid considerable importance to the क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल और पावर का बहुत रोल होता है इस अप्रोच में। सो अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इज गिवन टू गेनिंग कंट्रोल एंड पावर इन दिस अप्रोच। सो दस अ ट्रेड यूनियन इन वीबर स्कीम। अब इसमें व्हाट ही हैज सेड इज, वीबर हैज सेड दैट ट्रेड यूनियन नॉट ओनली फाइट्स फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस बट ऑल्सो टू गेन पॉलिटिकल पावर। Okay, so the trade unions want to gain economic interest or want to gain economic benefits, but at the same time, according to this approach, they also want political power. They want involvement in political and power struggles. Okay, so now अब इसमें क्या करते हैं, इस वाली अप्रोच में वीबर की सबसे पहले आई टोल्ड यू पावर और कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है। सो व्हाट डू वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिको ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस ऑन ट्रेड यूनियन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो टेक्नो कौन सी, टेक्नोलॉजिकल जो हो गए, इकोनॉमिक चीजें जो हो गई, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड हो गई, ठीक है, चेंजेस, इन सब के चेंजेस को हम एनालाइज करते हैं कि ट्रेड यूनियन पे क्या फर्क पड़ता है, ट्रेड यूनियन के स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। ठीक है, एंड देन again to analyze the subjective interpretation of workers' approaches to trade unionism and finally to analyze the power of various components of industrial relations। तो इसमें मैंने आपको कहा था ना, कंट्रोल, सबसे पहले कंट्रोल भी करना चाहती हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ साथ ट्रेड यूनियंस, और यहाँ पे पावर को भी हम एनालाइज करते हैं। इसमें पावर किन की, जो हमारे ये सब हैं फैक्टर्स हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, ठीक है, एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, एम्प्लॉयर्स के, ट्रेड यूनियंस की, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, ठीक है, तो इनकी power को भी we analyze in this approach. Okay, so basic what you need to remember is under the social action approach is that the trade unions try to gain power and try to gain control, and we study the power of various components of industrial relations, we analyze them. Okay, and everyone wants to gain power. Now yes, so if this is what they have told, the Weberian approach gives the theoretical and operational importance to control as well as power struggle. ठीक है, so this is what you need to remember. Then comes the
human resource management approach. And now human resource management approach includes all things that you study in human resource management, that uski bhi I would be taking classes. So let's first of all मैं आपका industrial relations लूंगी, ठीक है, complete करूंगी, फिर उसके बाद OB, HR, SSA पे आऊंगी, ठीक है. और लॉज मैं तब लूंगी जब हमारा न्यू सिलेबस आ जाएगा. वी नीड टू नो दैट अब कौन कौन से नए लॉज आ रहे हैं, बिकॉज लॉज हैव बीन अपडेटेड. सो द टर्म HRM इज वाइडली यूज्ड टुडे. There are many important components of HRM like human resource planning, human resource development. तो जो ये अप्रोच होती है ना, ये सब इन चीज़ों पे फोकस करती है. थोड़ी मॉडर्नाइज्ड अप्रोच है ये, ठीक है, कि हमें HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग पे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए पहले, ठीक है. सो ऑल इन चीज़ों पे फोकस करती है. Then psychological approach. Now see, psychological approach is that, see, problems जो IR की होती है ना, वो perceptions की वजह से होती हैं psychological approach के according. अब देखो psychology of individual से related है ये approach. So problems of industrial relations have their origin in perceptions of management, union and the workers. अब देखिए, अगर गलत perceptions होगा एक दूसरे के बारे में तो obviously conflicts बढ़ेंगी, ठीक है. अगर perceptions थोड़े सही होंगे एक दूसरे के बारे में, अगर management के perceptions would be good for the workers, then obviously there would be no conflict. Or workers perception would be good for the management, obviously there would be no conflicts, right? So the conflicts are caused as each group negatively perceives the behavior of the other. So obviously when you are negatively perceiving the behavior of each other, then it would lead to the arising of conflict. So factors like education, income, communication, values, beliefs impact these perceptions. So obviously when we study perception, so what are the factors that affect our perception? So obviously our education, our income, ठीक है, and is there a communication gap or not, our values, our belief system. So these all impact our perceptions. So industrial peace is a result of positive perceptions. As I told you, अगर positively perceive करेंगे, so then there would be industrial peace. अगर negatively perceive करेंगे, then there would be a lot of conflict. Okay. Now next comes the strategic choice theory. So first of all, it has been given by Cochin TA or TA Cochin, and it is also called 3-tier framework. This is also studied in management as well बच्चों. So इसमें क्या होता है, TA Cochin ने ना डिवाइड की थी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज, सी द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट, लेबर एंड गवर्नमेंट इनटू 3 tiers. इसने 3 tiers में डिवाइड की थी, टॉप टियर, मिडिल और फंक्शनल टियर, बॉटम और वर्क प्लेस लेवल टियर. अभी दिस इज वेरी इजी. टॉप टियर में क्या होता है, अब टॉप मैनेजमेंट में लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, वो टॉप टियर करता है. देन मिडिल और फंक्शनल टियर कौन सा होता है, रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. अब ये क्या होता है, ये ना एक लिंकिंग पिन होता है, ठीक है, जो मिडिल या फंक्शनल टियर होता है, ठीक है, ये इनको इनसे लिंक करता है, मतलब बॉटम वालों को टॉप से, क्योंकि मिडिल वाले हैं ना, मिडिल मैन है, सो दे आर रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. और बॉटम और वर्क प्लेस लेवल टियर जो होता है, जहां पे पॉलिसीज एक्चुअली इंप्लीमेंट होती हैं, जहां पे एक्चुअल काम होता है फ्लोर लेवल पे, सो दैट इज द बॉटम और वर्क प्लेस लेवल टियर. अब यहाँ पे सारे इंडिविजुअल वर्कर्स, लेबर, सुपरवाइजर्स और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं. So understood, top tier decision making, strategic decision making से related, middle tier collective bargaining से related. तो ये इनके इंटरेस्ट, जो लोअर लेवल वालों के इंटरेस्ट है, वो टॉप लेवल के आगे रखते हैं, ठीक है. सो पॉलिसीज बनाते हुए ये कंसिडर करते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, मिडिल और फंक्शनल टियर, तभी कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है यहाँ पे. और बॉटम वाला कहाँ है, जहाँ पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं, बॉटम और वर्क प्लेस लेवल टियर. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. Okay, so yes, like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon and share with your friends as well, as I would be daily uploading videos and completing your syllabus free of cost. Okay, so and yes, follow my Telegram group, I have pinned in the comments. Okay, so see you tomorrow guys, and share this thing with your friends as well, so that they can also benefit. Okay, so I am providing free classes, but yes, people should also get benefited out of them. And yes, soon I would be taking live classes as well, as soon as I get a lot of students. Okay, yeah, great. Have a nice day. Bye and God bless you.